वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन ऑफ रिंग थ्योरी। हमने अभी तक रिंग और सब रिंग के बारे में बात की है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स और वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल्स को भी हमने डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हम इंटीग्रल डोमेन्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जीरो डिवाइजर्स की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल डोमेन्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर बाय राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ जीरो डिवाइजर्स। ओके, सो फर्स्ट डेफिनेशन इज zero divisors. Okay, zero divisors. Okay, so a zero divisor is a non-zero element of a commutative ring are such that there is a non-zero element B in R with AB is equals to 0। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हमारे पास कोई दो नॉन जीरो नंबर हैं A और B, अगर उनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है देन वी कॉल दिस A एंड एज वेल एज दिस B इज जीरो डिवाइजर्स। ओके, द कंडीशन इज बोथ A एंड B मस्ट बी नॉन जीरो। ठीक है, तो बेसिक आइडिया क्या हो गया कि जब भी कोई दो नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उन दोनों नंबर को हम जीरो डिवाइजर्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से इन Z6, अगर हम इस रिंग की बात करें, दिस इज कम्यूटेटिव रिंग, सो हम ये देखते हैं कि 2 मल्टीप्लाई विद मॉड्यूलो 6 ऑपरेशन 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। ओके, एंड विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 6, राइट। तो हम ये देख पा रहे हैं कि 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन इस रिंग में 0 है, बट स्टिल दिस 2 नाइदर 2 नॉर 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, बट we have that neither 2 is equals to 0 or 3 is equals to 0 in Z6. So 2 and 3 are zero divisors in Z6, right? So I hope you clear with the definition of zero divisors. अब जीरो डिवाइजर्स की हेल्प से ही वी आर गोइंग टू डिफाइन द इंटीग्रल डोमेन। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट इंटीग्रल डोमेन। ओके, सो एन इंटीग्रल डोमेन is a commutative ring with unity and no zero divisors। ठीक है, तो कोई भी ऐसी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी जिसके अंदर जीरो डिवाइजर्स नहीं है, उस कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी को हम इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं। ठीक है, जब हमने रिंग की बात की थी तो हमने देखा था कि ये रिंग 6 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करती है। उनमें से फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करती है कि R अपनी फर्स्ट ऑपरेशन के साथ एक अबिलियन ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। जब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो दैट डिफाइन द एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड द सिक्स्थ प्रॉपर्टी गिव्स अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन। नाउ वी एडेड 2 मोर प्रॉपर्टीज टू R। फर्स्ट इज कम्यूटेटिविटी, तो हम किसी भी रिंग को कम्यूटेटिव कब बोलते हैं? जब सेकंड ऑपरेशन, यहाँ पर सेकंड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अगर कम्यूटेटिव है तो उस केस में वी कॉल दैट रिंग एज कम्यूटेटिव रिंग। ओके, और यूनिटी एलिमेंट
जैसे ही हमारे पास सेकंड ऑपरेशन की बात आती है तो हम देखते हैं कि क्या उस सेकंड ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, और वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है दैट एलिमेंट नॉन एज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ द रिंग। तो अगर वो यूनिटी एलिमेंट रिंग में बिलोंग करता है, रिंग का मेंबर है, तो हम कहते हैं रिंग विद यूनिटी। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस फ्रेज एज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, दैट इज CRU। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट जीरो डिविजर्स क्या होते हैं। तो अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है जिसके पास जीरो डिवाइजर्स नहीं है, तो ऐसी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी को हम इंटीग्रल डोमेन बोलेंगे। ठीक है, तो एक चीज तो हमारे पास श्योर हो ही चुकी है कि जब भी हम इंटीग्रल डोमेन की बात करेंगे तो वो एक रिंग होगा, वो एक कम्यूटेटिव रिंग होगा, वो एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा। ठीक है, सो आप अगर देख पा रहे हैं जो हम सेकंड ऑपरेशन दैट इज द मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करें, तो अब जो एक सिंगल थिंग दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मल्टीप्लिकेशन जो रिमेन रहती है, दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, राइट। और जब ये चीज एग्जिस्ट कर जाती है, ये इस तरीके के एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाते हैं, तो हम उन्हें यूनिट्स बोलते हैं। तो अगर किसी भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी का हर एक नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट बन जाता है, तो उस केस में दैट इंटीग्रल डोमेन इज नॉन एज फील्ड, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर का कंटेंट रहेगा। ठीक है, अभी हम कह रहे हैं कि ऐसे कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी जिसके अंदर जीरो डिवाइजर्स नहीं है, उन्हें हम इंटीग्रल डोमेन बोलेंगे। अभी हमने Z6 की बात की क्योंकि ये कम्यूटेटिव रिंग है, क्योंकि इसके अंदर यूनिटी एलिमेंट 1 एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो है। बट हमने देखा कि इसके अंदर 2 और 3 ऐसे एलिमेंट है जो कि जीरो डिवाइजर्स है, इसका मतलब ये एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है जिसके अंदर जीरो डिवाइजर्स है, इसका मतलब ये एक इंटीग्रल डोमेन नहीं है। ठीक है, सो लेट मी पॉइंट आउट दिस क्लियरली। Z6 with addition modulo 6 and multiplication modulo 6 is not an integral domain, right? अभी हम काफ़ी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जहाँ पर हम प्रूव करेंगे कि कुछ जो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो इंटीग्रल डोमेन बनाते हैं, और कुछ उन्हीं में से ऐसे कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी या फिर रिंग्स हैं जो कि इंटीग्रल डोमेन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ठीक है, सो let us discuss some examples so that we can understand the concept of integral domain. Okay, so the first example is very much easy. This is example first. Okay, this is first example of your referenced book है ना, उसके चैप्टर 13 का फर्स्ट एग्जाम्पल है। फर्स्ट इज द रिंग of integers is an integral domain. The solution, कभी कभी हमारे पास कुछ नंबर सिस्टम इतने फैमिलियर हो जाते हैं कि हमें सारी चीज़ें ऑब्वियस ही लगती है और हमें लगता है कि हम उसको लिखे कैसे। जैसे अब हमें पता है कि इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करने के लिए हमें जीरो डिवाइजर्स को डिस्कस करना है, और जब भी हम कोई भी दो इंटीजर का प्रोडक्ट जीरो लिख रहे हैं तो हमें ये तो श्योरिटी है कि दोनों में से कोई एक जीरो रहा होगा इंटीजर, तभी इनका प्रोडक्ट जीरो बना होगा, है ना। बट इसको हमें लिखना कैसे या फिर इसको जस्टिफाई कैसे करना है, दैट इज द आर्ट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। वी नो दैट द रिंग, which ring? Z addition and multiplication is a commutative ring with unity, है ना। इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन कम्यूट करता है और यूनिटी एलिमेंट 1 Z का एक मेंबर है, दैट इज 1 इज एन इंटीजर नंबर। नाउ व्हाट अबाउट द इंटीग्रल डोमेन? ओके, नाउ वी नो दैट फॉर A and B in Z, AB is equals to 0 if and only if, जो बात हमें पता है हम बस उसको लिख रहे हैं,
ठीक है, if and only if either a is equals to 0 or b is equals to 0, ठीक है, then there does not exist any zero divisors in z, and thus z plus and multiplication is an integral domain, ठीक है. सो वी वर नोइंग दैट इसके अंदर प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है, बट स्टिल हमें कुछ लाइन्स हम लिख सके, इसलिए वी आर प्रैक्टिसिंग. ओके, नाउ द second example is about the Gaussian integers. Example number 2, it is show that the ring of Gaussian integers, that is z, I, and this set is defined as b plus a plus b iota, where a and b are member of z, is an integral domain. Okay, हमने जब प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े थे तो वहाँ पर हमने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सब रिंग प्रूफ किया था. ओके, एंड इन द सिमिलर मैनर यू कैन प्रूव दैट दिस इज अ रिंग, एंड ऑफ कोर्स दिस इज द कम्यूटेटिव रिंग. एंड व्हाट अबाउट द यूनिटी एलिमेंट, दैट इज 1 + 0 आइटा, तो वो भी इससे बिलोंग करता है. तो आई कैन से क्लियरली दैट दिस z आइटा इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी. नाउ वी विल फोकस ऑन कि इसके अंदर किस तरीके से जीरो डिवाइजर्स एग्जिस्ट नहीं करते. ठीक है, सो we know that z iota is a subring of C and hence a ring. ठीक है, क्योंकि आपको अगर रिंग प्रूफ नहीं करना है तो यू कैन यूज दी सबरिंग टेस्ट, और वहां पर आप बता सकते हैं कि दिस z आइटा इज अ सबरिंग ऑफ C and hence a ring, right? Now what about the commutativity? We know that let us consider this is first point. Okay, now what about the second point? Since for any x that is equals to a plus b iota, y equals to c plus d iota, in zi we have that x y that is equals to a plus b iota times c plus d iota, right? And you can write this as a c minus b d, and plus we have ad and b c iota, right? And this product can be written as, you can write this as, this is equals to ca minus db plus da plus cb iota. Okay, you can write in this way. And of course ये हम क्यों लिख पा रहे हैं, since z is commutative ring. क्योंकि सारे सी ए बी डी ये सभी इंटीजर्स ही हैं, तो हमने ये जो मल्टीप्लिकेशन किया है ये सब हमने इंटीजर्स में किया है, राइट? एंड दैट इज ऑफ कोर्स इक्वल्स टू, वी कैन राइट दिस एज सी प्लस डी आई मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी आई. ओके, एंड ऑफ कोर्स दिस विल बी इक्वल्स टू वाई टाइम एक्स. सो दिस implies that z I is commutative ring. Okay, commutative ring. Now what about the next unity element? Also we can say that 1 is equals to
1 plus 0 iota, that is also in Z I. So thus we have that Z I is CRU, commutative ring with unity. Once the ring becomes commutative ring with unity, then only we can talk about the integral domain. ओके जब तक हमें श्योरिटी नहीं है कि वो कम्यूटेटिव रिंग है और यूनिटी उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तब तक हम इंटीग्रल डोमेन के बारे में नहीं सोचेंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं जीरो डिवाइजर्स की. सो वी आर सीइंग दैट Z I has no जीरो डिवाइजर्स. ठीक है, अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? लेट x that is equals to again a plus b iota in Z I and y equals to c plus b d iota, sorry d iota belongs to Z I. ठीक है, now let x y is equals to 0. Then what we will need to prove? Then we need to show x equals to 0 और y equals to 0, है ना. ये हमने प्रूव करना है. To prove that this is a integral domain. Okay, now if x and y is equals to 0, then we can write the product directly. So from the above product, from this one, okay, this one I'm writing directly. So we can say that AC minus BD, and then we have AD minus plus BC iota, that is equals to 0 plus 0 iota. And we know that this real part must be equals to the real part and the imaginary part must be equals to the imaginary part in the case of equivalency. So we have AC minus BD is equals to 0, and let me call it AD plus BC is equals to 0. Let us call this as equation number 1 and this is equation number 2. अब हम different case consider करते हैं. ठीक है, now let x is not equals to y, then we shall show that y is equals to 0, right? अगर x 0 नहीं है तो y पक्का हमारे पास 0 होना ही चाहिए. Now we have that if x is not equals to 0, then this implies that a is not equals to 0, or let me write that at least one of a and b is नॉन जीरो, राइट. अगर x नॉन जीरो, इसका मतलब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट में से कम एक मेंबर तो नॉन जीरो होना ही चाहिए. ठीक है, नाउ वी आर कंसिडरिंग द केस वन. देखिए हमें पता है कि ये इंटीग्रल डोमेन बनेगा, बट स्टिल मैं आपको फिर से रिपीट करके कह रहा हूं कि हमें पता होना चाहिए कि हमने लिखना कैसे, इसकी हमें प्रैक्टिस होनी ही चाहिए. ठीक है, सो फर्स्ट वी आर कंसिडरिंग लेट a is not equals to 0 and suppose b is equals to 0, है ना. then from this equation you can say अगर b 0 है तो we have a c is equals to 0. Now since a is not equals to 0, then this implies that c is equals to 0, right? And from 2 you can see अगर हम b को 0 पुट करेंगे तो ad will be equals to 0. Okay, so we have AD is equals to 0. This implies that D is equals to 0. ये हम कहाँ से लिख रहे हैं? हम ये सेट ऑफ इंटीजर्स से लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इंटीग्रल डोमेन. तो अगर वहां पर दो इंटीजर का प्रोडक्ट गिवन है
और वो प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों में से कोई एक नॉन जीरो जरूर होगा, दोनों में से कोई एक जीरो जरूर होगा। क्योंकि ए नॉन जीरो है तो वी आर श्योर दैट सी मस्ट बी जीरो। अब अगर सी और डी दोनों ही जीरो है देन you can say so y that is equals to c plus di that is equals to 0, and we are done. Now case second, let a is equals to 0 and b is equals to not 0. Okay, so then in that case जैसे ही हमने ए के लिए कंक्लूजन निकाले थे वैसे ही अब बी के लिए भी हम करेंगे। देन फ्रॉम वन यहाँ पर हमारे पास था ए सी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि उस केस में वी हैव दैट बी डी विल बी जीरो। नाउ ए इज जीरो देन दिस टर्म विल बी जीरो एंड वी हैव दैट फ्रॉम वन दैट बी डी इज इक्वल्स टू जीरो एंड दिस implies that d is equals to 0, and from 2 you can say that our a is equals to 0, then this part will be 0. Now we will have that BC is equals to 0. BC is equals to 0 and this of course implies C is equals to 0. Again we have y that is equals to C plus D iota is equals to 0. So again we are done. हम हर एक केस के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। Now consider the case third where a is not equals to 0 and b is not equals to 0 ना, हम दोनों को ही नॉन जीरो लेके चले। अब अगर a नॉन जीरो है फॉर a is not equals to 0 from 1, हमारे पास 1 में क्या था दैट a d minus a d that was AC minus BD. Okay, so we can have that AC minus BD that is equals to 0. Now since A is not equals to 0, so what we can write that this is C is equals to BD upon A. Let us call this as 3. Now using 3 into 2 we obtain, अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या था दैट इज ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू 0, राइट। ए की जगह हम सी की जगह क्या प्रूफ कर रख सकते हैं हम बी डी अपॉन ए। सो ए टाइम ए डी प्लस बी सी, सो ए डी plus b, and in place of c we can write this bd upon a, so we can write b square d upon a is equals to 0, and of course this will implies that a square d plus b square d is equals to 0, and this will implies a square plus b square d is equals to 0. Now a and b both are non-zero, then there is sum of square will be non-zero, so this implies that d is equals to 0 and that will implies that c is equals to 0, क्योंकि यहाँ पर जब हम d equals to 0 पुट करेंगे तो c will be equals to 0, और यहाँ से यहाँ हम कैसे आ रहे थे since a square plus b square is not equals to 0, है ना। So I can say since a square plus b square is not equals to 0, and this is from 3. So this is how we can show that y that is equals to c plus di is equals to 0. So thus x equals to y is equals to 0 and x is not equals to 0, then y is equals to 0, and conversely जैसे हमने इसके लिए प्रूफ किया है वैसे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कन्वर्सली, इफ y is not equals to 0 then x is equals to 0. So hence xy is equals to 0 is implying that x equals to 0 or y equals to 0, and this implies that z
I has no zero divisors, right? And which shows that Z I is an integral domain. Okay.